Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS-5111. Okay, so today we have to study the types of cropping system. Okay, so in our previous lecture we had discussed the cropping system and cropping pattern, their terminologies and advantages and disadvantages. Then after that we had already seen some crop rotations, some examples, and what the principles of crop rotation. Okay, so I hope you all understand that particular topic. So today we will discuss the types of cropping system. Okay, so let us see. As you can see, the depending on the resources and technology availability, different types of cropping systems are adopted on from. ठीक है, so different types of cropping systems हम adopt करते हैं according to our weather condition, according to that particular area, ठीक है, और according to soil and requirement of their पॉपुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री है या नहीं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, या अप्रोच करते हैं हम कह सकते हैं. ओके, सो देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग. ओके, सो फर्स्टली वी टेक इंटरक्रॉपिंग एंड डिस्कस द व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम. ओके, so growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land in a cropping season, that is called the intercropping. Okay, and the growing of two or more crops in sequence on same piece of land in a farming year, that is called the sequential cropping. Okay, so both are quite different, we can say, बट द डेफिनेशंस इज़ ऑलमोस्ट सेम. हमें ऐसा लगता है कि सेम है, बट दोनों डिफरेंस है. देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, कि जब हम दो या तीन से क्रॉप जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड में हमने साइमल्टेनियसली जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप की जो क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. ठीक है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या करते हैं, हम सेम पीस ऑफ लैंड में अगर हम सिक्वेंशियली कोई क्रॉप लेते हैं, सपोज दैट वी हैव टू grown that particular cereals crop, and after that we have to grown that some pulses crop. Okay, so that is called the sequential cropping. Okay, so in intercropping, June to September, which is kharif crop, okay, which is come under the category of kharif crop, we can say, and October to January, which is rabi crop. Okay, so that is the comes to the intercropping. Okay, or we can say that belongs to the intercropping. After that, June to May includes 3 seasons. ठीक है, so sequential cropping, that is the examples of the seasons for that particular cropping system, we can say that. Okay, and the third one is intercropping is intensive cropping mainly in space dimension. Then sequential cropping is intensive cropping mainly in time dimension. Okay, so major difference we could say that particular third one is, which is space dimension is very important for the intercropping, and time dimension is very important for the sequential cropping. why, कैसे है, ठीक है, तो स्पेस क्रॉपिंग स्पेस डायमेंशन मीन्स आप क्या समझते हैं, कि हमें स्पेस अप्रोच करना है, कि कितने स्पेस में हमें सीरियल्स लेने हैं, या उसके सेकेंड रो में हमें पल्सेस लेने हैं, या अनदर क्रॉप जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड दैट पर्टिकुलर एरिया, उसके हिसाब से क्या हमें लेना है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंटरक्रॉपिंग. ओके, बट फॉर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम डायमेंशन फॉर क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल क्रॉपिंग पैटर्न, समथिंग लाइक कि हमें पल्सेस के बाद सीरियल्स के बाद हमें पल्सेस लेना है, या डीप रूटेड क्रॉप के बाद हमें शैलो रूटेड क्रॉप लेना है, तो समथिंग लाइक दैट. ओके, सो देयर आर सम टाइप्स. सो इंटरक्रॉपिंग इज
intercropping and mixed cropping is come under the category of intercropping, and monocropping and multi-cropping, they are types of the sequential types of cropping system. Okay, so I hope you all got the sense. Anyways, let us discuss the intercropping in detail. So intercropping refers to growing of two or more dissimilar crops simultaneously on the same piece of land. Okay, so दो या दो से dissimilar crop, maybe it could be a similar crop also. Okay, so हम जब same piece of land में simultaneously ये crop लेते हैं, that is called the intercropping system. Okay, so the base crop necessarily in distinct row arrangement and its recommended optimum plant population, it's suitably combined with the additional plant density of associated crop. Okay, so associated crop, that is means सहयोगी crop. Okay, something like that कि हम क्या करते हैं, एक डिस्टिंक्ट रो बनाते हैं, ठीक है, रो अरेंजमेंट करते हैं, और उस रो अरेंजमेंट में हम अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर सुटेबिलिटी, हम क्या करते हैं, प्लांट डेंसिटी लेते हैं, एक मेजर क्रॉप लेते हैं और एक एसोसिएटेड क्रॉप लेते हैं. ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है, हम इसे कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड द इंटरक्रॉपिंग पैटर्न. ओके, सो द objective is for what? Intercropping. Okay, so there are some objectives like the intensification of cropping both in time and space dimension, and raise productivity per unit area by increasing the pressure of plant population. It has utilization of growth resources than sole crop. Okay, so utilization of growth resources means कि हमें एक ही टाइम पे दो टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी मिल जाती है. ठीक है, तो ये क्या होता है, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ग्रोथ रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, उनका हम क्या करते हैं, एक सुटेबल यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, कैसे यूज़ कर लेते हैं कि हम उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अप्रोच करते हैं कि हमें कौन सी क्रॉप लेनी है या कौन सी क्रॉप जो है वो बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट ऑल्सो. Then it has better utilizations of growth resources that sole crop. मतलब एक अगर हम इंडिविजुअली सोल क्रॉप लेते हैं, सपोज हमने सिर्फ पैडी का ही क्रॉप लगा लिया, या हमने किसी पल्सेस का ही क्रॉप लगा लिया, सपोज हमने पिजन पी का ही क्रॉप लगा लिया, तो क्या होगा, लैंड ऑफ कोर्स पिजन पी का प्रोडक्शन मिलेगा, पर पिजन पी के साथ हमें किसी और अनदर जो हमारे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया पे. ठीक है, बट अगर हम पल्सेस के साथ कोई क्रॉप और क्रॉप जो है जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिसकी, उसका हम अगर कल्टीवेशन करते हैं, तो क्या होगा, वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे सेम पीस ऑफ लैंड पे हमें दो टाइप के क्रॉप मिल रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जो है उसका यूज़ भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी बनी हुई है. क्यों फर्टिलिटी बनी हुई है, क्योंकि हमने दो अलग अलग टाइप के क्या लिया हुआ है, क्रॉप लिया हुआ है. तो दोनों क्रॉप एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बैलेंस करते हैं, कॉम्पिटिशन नहीं करते, बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो हमें इस टाइप का क्रॉप चूज़ करना होता है जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बेनिफिशियल हो, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हो, टोपोग्राफी की अकॉर्डिंगली हो. ठीक है, तो दैट कुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ, वी कैन से दैट, द इंटरक्रॉपिंग system. Okay, earlier I discussed the principles of intercropping system. Okay, so anyways, the generally legumes and non legumes are grown. जैसे मैंने बताया कि पल्सेस के साथ आपको दूसरे क्रॉप लेने होते हैं ताकि वो एक दूसरे को क्या करें, एसोसिएट करें. ठीक है, so there are some advantages for intercropping system. So additional income from the companion crop. ठीक है, एडिशनल इनकम मिलता है, एक ही टाइम पे हमें दो टाइप के क्रॉप मिलते हैं, जो दोनों टाइप के क्रॉप की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है. तो दैट कुड बी अ वेरी वी कैन से दैट additional income for the farmer. Okay, so if the principal crop is damaged due to unfavorable conditions like drought, fraud, epidemics, etc., companion crop may give sustain income. ठीक है, if अगर हमारी कोई ऐसी क्रॉप है, मेजर क्रॉप जो हमने लिया है, वो किसी वेदर फॉरकास्ट की वेदर एब्रिवेशन की वजह से, ठीक है, मतलब फ्लड की वजह से या ड्रॉट की वजह से, किसी एपिडेमिक डिसीजेस की वजह से अगर ख़राब हो जाती, तो हमारे पास कंपेनियन क्रॉप जो होता है वो होता है, तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता. ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है. ठीक है, देन लेग्यूम्स ग्रोन एज कंपेनियन क्रॉप ऑलवेज बेनिफिट द प्रिंसिपल क्रॉप थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल्सो यूटिलाइज सॉइल मॉइस्चर फॉर डीपर सॉइल लेयर्स. देन क्विक ग्रोइंग कंपेनियन क्रॉप्स
always suppress the harmful weeds thriving in the interspace of principal crop, gainful utilization of the labor by increasing more man days, employment potentially. Okay, then better utilization of growth resources, nutrient, water, light and space, etc. After that, less incidence of insect pest and diseases attack and less erosion of soil. ओके, सो लेस इरोजन ऑफ सॉइल क्यों? क्योंकि हमें क्रॉप रोटेशन के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उसको फॉलो करके हमें क्रॉप को अप्रोच करना होता है. कैसे कि जो डीप रूटेड क्रॉप है उनके साथ अगर हम ले रहे हैं तो सेलो रूटेड क्रॉप लगाएं. ठीक है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट या नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा जाने वाले क्रॉप के साथ हमें लेस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट क्रॉप लगाएं. ओके, सो इस टाइप से हमें क्रॉप का अप्रोच करना होता है. जिस टाइप से वो क्या करे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और बेनिफिशियल हो. ठीक है, सो ये था हमारा एडवांटेजेस फॉर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. एट द सेम टाइम देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस फॉर intercropping. Okay, so see, everything has pros and cons. Okay, so there are some advantages, so there are some disadvantages only. So the fertilizer management is difficult because the nitrogen requirement of the crop is different. Okay, so हमें एक इंडिविजुअली ये सेपरेटली अलग अलग फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट जो हमारे क्रॉप को चाहिए रहता है तो हमें अलग अलग प्रोवाइड कराना पड़ता है. ठीक है, अगर हम सीरियल्स के साथ पल्सेस लिया तो पल्सेस की जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी सीरियल्स क्रॉप ऑल्सो. ओके, तो ये सारे जो बैलेंसेस हैं वो हमें देखना पड़ता है. काफ़ी स्किलफुल अप्रोच हमें क्रॉप पे लगाने पड़ते हैं. ओके, then difficulty in harvesting because of different seeding time of crops, and there are certain combination which suppress the growth of another crops and may be conducive to insect pests and diseases. So these are some disadvantages for cropping system, we can say that, or intercropping also. Okay, so I hope you all got the sense for the particular terminology which is intercropping and sequential cropping. In our next lecture we will discuss the different cropping system like relay cropping and mixed cropping, monocropping, something like that. Okay, so आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much and till then be